students, back to your maths class. Hopefully you have understood the properties of square numbers and we have completed exercise 5.6.1 question 1 to 7. I'm not getting that comments and I am presuming that you all are understanding what I am explaining. If you go through the properties, they are very easy and very you can solve by your own these exercise problems if you are thorough with the properties of square numbers. Now question 6.1, question 8, first one, express 49 as the sum of 7 odd numbers. Now as I told, if there are 7, you want to express any square as sum of odd numbers consecutive. Now it is 7 odd numbers, means it is obvious the answer will be 7 square, n square. This is one of the property. जितने नंबर्स आप ले रहे हो उसका स्क्वायर मतलब 49, उतना उसका स्क्वायर मतलब उसका आंसर होता है. तो अब ये 7 नंबर है, इसका मतलब ये आंसर हमारा 7 स्क्वायर ही होगा, n स्क्वायर. अभी आपको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स. तो मैं 7 ऑड नंबर्स ले लूंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1. सो 1, 3, 5, 7, then 9, 11. How much it is? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So these are the 7 odd numbers. So as these are 7, so answer will be n square, that is 7 square, and 7 square is 49. Now similarly 121 is 11 square. That means the odd numbers, sum what numbers you are taking to find the sum is 11 numbers. तो मैं 11 लिखूंगी, 1, 3, 5, 7, ऐसे ऑड नंबर्स में 11 लिखूंगी. तो 1 अभी यहाँ तक तो 9 है ही, 7 है ही, प्लस 13, 15 एंड 17. तो 11 ऑड नंबर्स है, इसके लिए उसका जो आंसर आएगा वो 11 स्क्वायर ही आएगा. So that is 121. This is one of the property. So we will just count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Right? So these are the 11 odd number sum and answer is square of that. That is 121. Very simple. Now going to question 9. This is also based on one of the properties. So how many numbers lie between the squares of the following numbers? Now as we have learned that if there are number n and n plus 1. So this is n and this is n plus 1. So if you take square of both, the numbers will be, how many numbers? That non-perfect square will be 2n. Right? And 2n, n is 12. So here answer will be 2 into 12 and that is 24. So it is direct use of property. ये दोनों की स्क्वायर है, एक प्रॉपर्टी है, एक है n स्क्वायर और एक है n प्लस 1 स्क्वायर. दोनों के बीच में कितने आते हैं, हाउ मेनी नंबर्स दैट आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो वो होते हैं 2n. मतलब 144 और 169 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, वो आते हैं 2n. n हमारा 12 है, इसका मतलब नंबर्स कितने होंगे, 2 into 12 that is 24. Now it is 25 square and 26 square. So how many numbers will lie? Again n is 25. So the numbers lie between is 2 into n, that is 2 into 25, and this is 50. Very easy, direct use of formula. 99 and 100, this is n
प्लस 1, इनके बीच में क्या होगा, कितने नंबर आएंगे 2n, इसका मतलब 2 इंटू 99 और वो है 198. सो द नंबर्स lie between is 2n, that is 2 into 99, and this is 198. Right? So this completes your exercise question 8 and 9. Now before going to exercise 6.2, we will learn some concepts related to 6.2 and then proceed to the exercise. Now here you have to finding the square of a number, but you have to find without actual multiplication. Now suppose if you want to find the square of 23, हम क्या करेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 23 करेंगे, लेकिन अब मुझे नहीं करना है तो मैं क्या करूंगी, द मेथड इज, इसको करना है 23 square, that is equal to, I will split it as 20 plus 3 whole square. Right? Now how to expand this? तो पहले मैं ले लूंगी, this is actually formula 20 into 20 plus 3, ऐसे करना है. फिर मुझे प्लस 3 इंटू 20 प्लस 3, पहले मैं स्प्लिट कर दूंगी 23 को 20 प्लस 3 होल स्क्वायर, 20 को बाहर लेके 20 प्लस 3 लूंगी, प्लस 3 को बाहर लेके 20 प्लस 3 लूंगी. नाउ ओपन द ब्रैकेट, सो दिस विल बी 20 स्क्वायर 20 into 20, 20 square plus 20 into 3, 60 plus 3 into 20, I will 20 into 3 plus 3 square. Right? Now I will add it. I am again repeating. When I have opened the bracket, 20 into 20 is 20 square. Plus I will write as it is 20 into 3 plus 3 into 20 plus 3 into 3 is 3 square. Now I will solve it. 20 square is 400 plus 60 plus 60 plus 9. Right? Now it is 400 plus 120 plus 9. This will be 520. 520 plus 9 is 529. And this is your answer. Right? Similarly, you can do for 32 also. If you want to find 32 को मैं कैसे split करूँगी? 30 plus 2 whole square. Right? Now 30 I will take outside into 30 plus 2 plus 2 into 30 plus 2. Now open the bracket. This will be 30 square plus 30 into 2 plus 2 into 30 plus 2 square. Now solve it. 900 plus 60 plus 60 plus 4. So this is 124 plus 90. This is 1024. So in this formula I have not multiplied it but use this formula to get it by splitting and then expanding like this. Now you will see another concept of Pythagoras triplet and proceed to exercise 6.2. Now Pythagorean triplet. Before this we have seen how to find the square of number without actual multiplication. Another is topic what I will be discussing is Pythagorean triplet. Now what are these Pythagorean triplet? वो होता क्या है? Now if A, B, C are three numbers such that C is
greater than A and C is greater than B. So such that the A square plus B square is equal to C square, then ABC is called Pythagorean triplet. ट्रिपलेट इसको इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 है, और पाइथागोरन इसके लिए बोला है क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम जैसा है, जैसे आपने सीखा था हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, इसके लिए इसको बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो 3 नंबर ऐसे होने चाहिए जो सी ए बी सी तो दोनों से बड़ा होना चाहिए, और आप ऐसा देखिए अगर सी स्क्वायर निकाले और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करें तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 5, अभी ये है ए है बी है और ये सी है, सी दोनों से बड़ा है। अभी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं कैसे चेक करेंगे? तो अगर मैं सी ये है, ये बी है और ये ए है, तो मैं अभी सी स्क्वायर निकालती हूं, कितना आएगा 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 25। फिर मैं निकालती हूं ए स्क्वायर, ये हो गया 3 स्क्वायर मतलब 9। फिर मैं निकालूंगी बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब मैं जब दोनों को प्लस करूंगी 60 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो आएगा 9 प्लस 6 इक्वल टू 25, और ये दोनों इक्वल है, राइट? इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 3 नंबर होने चाहिए ए बी सी सच दैट सी इज ग्रेटर देन बोथ ऑफ देम, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब आप सी का स्क्वायर निकालते हो वो इक्वल होना चाहिए ये दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब ए स्क्वायर निकालो बी स्क्वायर निकालो, दोनों को ऐड करो तो वो सी स्क्वायर के जैसा होना चाहिए, तब वो हो गया पाइथागोरन ट्रिपलेट, राइट? अभी सपोज इन्होंने जनरलाइज किया है, अगर आपको बोला है कि एक नंबर ट्रिपलेट का दिया हुआ है सपोज 14, अब वो बोल रहे हैं कि दूसरे 2 नंबर निकालो, so how you will find? So for that ट्रिपलेट के 3 जनरलाइज एक्सप्रेशन दिए हैं। फॉर एनी नंबर एक एक्सप्रेशन होता है 2m, दूसरा होता है m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1। तो ये 3 एक्सप्रेशन है, एक है 2m, दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा है m स्क्वायर प्लस 1। ये तीनों को आप जनरलाइज कर सकते हो, तीनों मेंबर है ट्रिपलेट के, और अगर इसमें से कोई एक भी पता है मेंबर तो इस फॉर्मूले से हम बाकी के 2 निकाल सकते हैं। if you find the value of any one also, you can find the other 2 members also, right? Now how the question is there in your exercise? Now these are 2 examples. Now write a Pythagorean triplet. आपको ट्रिपलेट निकालना है यानी 3 मेंबर निकालने, उसमें से whose one member is given. One member is 14. So as we know there are 3 numbers 2m, m square minus 1 और m square plus 1. तो जो एक मेंबर दिया है वो हम 2m से कंपेयर करेंगे, right? From this we will find the value of m. This will be 14 by 2 and this is 7. तो एक मेंबर मुझे मिल गया, मुझे m की वैल्यू मिल गई। Now I will find m square minus 1. So this is 7 square minus 1 मतलब 49 minus 1 is 48. अब मैं निकालूंगी तीसरा मेंबर that is m square plus 1. 7 square plus 1, 49 plus 1 is 50. Right? So one member you know it, that is 49, another is 48 and third is 50. तो आप देखना ये 50 ये दोनों से बड़ा है 14 और 48 से, तो इसका स्क्वायर निकालोगे
वो आंसर और ये दोनों का स्क्वायर निकाल कर प्लस करोगे तो वो 2500 ही आएगा. Right? Again I am repeating, if one member is given in the Pythagoras triplet, compare it with 2m. उसमें से m मिल जाएगा. दूसरे और तीसरे की वैल्यू दी हुई है, वो होता है m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1. तो इससे आपको दोनों की वैल्यू मिल जाएगी. नाउ हियर अगेन 2m इज इक्वल टू 16. एक मेंबर दिया हुआ है. So m is equal to 16 by 2 and this is 8. You got m. Now another member is m square minus 1. So that is 8 square minus 1. 64 minus 1 is 63. तीसरा आएगा m square plus 1. So this is 64 plus 1 is 65. In this way you got the other two members of triplet also. Right? So in this way you have to find, very easy it is. So we will proceed to exercise 6.2. Only two questions are there. First question is only to find the square without actual multiplication. This we have discussed is. So this 32 आपको split करना है इसको. 30 plus 2 ये तो मैंने किया ही था. So 30 into 30 plus 2 plus 2 into 30 plus 2. So 30 square plus 30 into 2 plus 2 into 30 plus 2 square. This is 900 plus 60 plus 60 plus 4. So this is 1024. Now again we will do for 35. Again split it as 30 plus 5 whole square. अभी मैं 30 को बाहर लूंगी, फिर अंदर 30 plus 5 plus 5 into 30 plus 5. Now I will open the bracket. 30 into 30 होता है 30 square plus 30 into 5 plus 5 into 30 plus 5 square. So this is 900 plus 150 plus 150 plus 25. So this is 900 plus 300 plus 25. So this is 1, 2, 2, 5. Right? So you can do the rest also. It's very simple. We will see 2-3 problems now and proceed to question 2. This is 86. We will again split as 80 plus 6. That is whole square. So here 80 multiplied by 80 plus 6 plus 6 into 80 plus 6. Now open the bracket. 80 square plus 80 into 6 plus 6 into 80 plus 6 square. Right? Now 80 square is 6400. 80 into 6 is 480. Again 480 plus 36. Now we will add and write it. So 6400, 480, 480, 36. 16 plus 1, 19, 12, 13. So 16 plus 3, 19, 4 3s are 12, 13. So answer is 7396. Right? Now again 90 plus 3 we will split as 90 plus 3 whole square. Again 90 you will take here in bracket. 90 plus 3 plus 3 into 90 plus 3. Open the bracket. This will be 90 square plus 90 into 3 plus 3 into 90 plus 3 square.
Now find the squares. It will be 8100 plus 270 plus 270 plus 9. So we will add and find that. So 8100 plus 270 plus 270 plus 9. So this is 14, 6. So it is 8649 is the answer. Right? Similarly, fifth one, 70 plus 1 whole square. So this will be 70 into 70 plus 1 plus 1 into 70 plus 1. So open the bracket, 70 square plus 1 into 70 plus again 1 into 70 plus 1 square. So this is 4900 plus 70 plus 70 plus 1. So this is 4900 plus 140 plus 1. So this is 5041. Right? So sixth one, it is hope you have understood now. Sixth one I am giving as homework, that is 46. You have to do it by yourself. Now question 2. Write a Pythagoras triplet whose one member is given. I have done 2 examples. Out of that, second and third you can refer the example what I have explained. So that are same as it is. So I will not be repeating that problem. So here again, as we know, the members of the triplet are 2m, m square minus 1 and m square plus 1. So when you compare, this will be 2m equal to 6, m equal to 6 by 2 equal to 3. Now find m square minus 1. This will be 3 square minus 1, 9 minus 1 equal to 8. M square plus 1 is 3 square plus 1, so 9 plus 1 equal to 10. So the other members are 6. First is 6, you know, other are 8 and 10. Now similarly find for 18. Second and third I have done in examples. So this will be 2m equal to 18. So m equal to 18 by 2, that is 9. You got the value of 9. So m square minus 1 equal to 9 square minus 1. So 81 minus 1 is 80. Now m square plus 1 is 9 square plus 1. So that is 81 plus 1 is 82. So these are the other members of Pythagoras triplet, 80 and 82. So thus we have completed the second exercise. Now we will be proceeding towards the square root section. I will explain you how to find, and then we will go to exercise 6.3. Please, you have any doubt, comment it, ask it. You can contact any time. So this is very important chapter. You must know the properties and each and every way of finding the square root, right?